Yeah, hi everyone. So in this series, we will discuss about how to create DDL means Dynamic Distribution Group. So इस सेशन में इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कैसे हम डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट करेंगे क्या प्रोसेस रहेगा विथ प्रैक्टिकली सो फर्स्ट नीड टू ओपन tenant means first need to open credential after click on a admin option under the admin click on a teams and group. So everyone, currently I am talking about DDL, not a DL, right? So if I am talking about DL, so definitely use the team and group and you can create a DL, right? जैसा कि मैंने आपको लाइक थ्योरी सेशन में एक्सप्लेन किया कि DDL क्रिएट करने के लिए फर्स्ट नीड टू ओपन Microsoft 365 admin center after open the Exchange server, राइट डीडीएल आप टीम एंड ग्रुप्स के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते क्लिक ऑन अ डीएल ऑप्शन एंड सी राइट आपको डीडीएल का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है if need to create a DDL if need to create a dynamic distribution list so click on a show all option after that scroll down and exchange is available right so click on a exchange option after under the exchange need to click on a group option under the recipient group is available right so click on a group option जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करते हैं right you can see dynamic distribution list is visible right dynamic distribution list is visible right सो अभी हम क्रिएट क्या करने वाले हैं DDL डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट सो अगेन रिपीट फर्स्ट नीड टू ओपन Microsoft 365 admin center scroll down and click on exchange after that this option is visible then click on a recipient under the recipient group is available so click on a group then move out to group and you can create a Microsoft 365 group, you can create a distribution list, you can create a dynamic distribution list. So currently we're talking about dynamic distribution list. So click on a dynamic distribution list, right? After click on a add a group option. जैसे ही आप add a group option पे क्लिक करते हैं, every option is visible, right? So choose the option. क्या आप क्रिएट करने वाले हैं? अभी हम क्रिएट करने वाले हैं डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन सो क्या है डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंड मेल टू ऑल मेंबर ऑफ दिस लिस्ट ग्रुप मेंबर इज लिस्ट अप टू एवरी 24 आवर्स बेस्ड ऑन अ फिल्टरिंग सो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या फिल्टरिंग्स है सो फर्स्ट नीड टू सेलेक्ट डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एंड क्लिक ऑन अ नेक्स्ट ऑप्शन to get start and fill the detail about group right like my group name is desktop. Enter the description, then click on a next. After that, everyone first need to assign group, first need to assign group owner because group owner has a permission to add and remove the members, delete the conversation, delete the like shared inbox and some other, right? बिकॉज ग्रुप ऑनर कैन मैनेज द ग्रुप्स वो अपने सारे ग्रुप को मैनेज करेगा राइट अंडरस्टैंड सो फर्स्ट नीड टू सेलेक्ट द ऑनर सो जस्ट लाइक ऑनर इज अ आशुतोष मैंने आशुतोष को सेलेक्ट किया ऑनर राइट आप अपने कंपनी के में जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दैट मेंबर सो
specify the type of recipient that will member of this group. किस recipient members को आप इस group का member assign करना चाह रहे हैं, right? Like all recipient, सारे recipient को आप ऐड कर सकते हो. Otherwise, only some recipient like user and exchange inbox, mail user and external email addresses, like resource mailbox, mail contact and external like mail addresses, right? So हम लोग all recipient को enable कर रहे हैं. After that, member in this group will determine the rules, right? Means condition. जस्ट लाइक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन लाइक सिटी वाइज, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट वाइज. सेट द कंडीशन जस्ट लाइक state wise. So we can enable the condition is state wise. We can enable the condition is company wise. We can enable the uh, like enable the condition is department wise, है ना? Just like मैं एक department wise condition apply कर रहा हूँ, so select a department. After into the like words, है ना? Means into the keywords like department is SD, right? Department is some other. Add another rule. हम another rules को भी ऐड कर सकते हैं like department. Again into the department is desktop. Again add the another like department. Select department into the like department so that like department is HR. है ना? So you can like add the multiples rule, add the another's rule, right? ऐसा नहीं है कि आप डिपार्टमेंट वाइज ही क्रिएट कर सकते हैं सेम टाइम. क्लिक ऑन a rule, add rule and select the conditions. So like condition is state wise, है ना? Like state wise means like इंडिया, यूजर हमारे इंडिया का होना चाहिए. Another, again select the condition, state, word like US, then click on a next. After that, like create a dynamic distribution mail ID. Like that, send mail to all member of this list. So need to create a group member listing and it's updated every 24 hours. Right? ये 24 hours में update भी होता रहेगा according to dynamic because this is word is like dynamic. हाँ? So like मैंने dynamic distribution list का किसके लिए create किया है? Desktop, है ना? So desktop at the radivision.com, scl.com, tcs.com. After click on the next. So you have almost there. Make sure to every like looking rights before like adding your new groups, right? So that verify the all details. Each and every detail is right. Then click on a create a group option. जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं यू कैन सी योर ग्रुप इज like created, your dynamic distribution group is created, right? है ना? So that I hope each and every one easily understand on this concept. So next video we discuss about security, how to enable the security, how to create a security group and why security group is required. So हम next video में discuss करेंगे. So thank you everyone.